You hear that? They Yes, were on sir, the, I have heard the news. yeah. I mean, they had circled the moon from very close and successfully came back without any issue anywhere. And now NASA is going to analyze the data which they have collected uh, uh, for future use. The idea is that just like uh, um, just like right now, like you can take a plane from New Delhi and come to America or Europe. You can go and come back for a trip and visit and business and then go back. Similarly, they want to have a regular flight, a rocket flight to go to moon. So that, for example, initially it will open for those who have a lot of money. You know, for example, you can give like I'm just making it up that okay, you want to go to visit the moon, you need to pay the ticket will be how much 10 crores of rupees per person. So you can buy the ticket, go to the moon, walk there, come back, have the experience. So, and then also that will be for the tourists, and also there will be uh, for the scientific region. It is very important because there is no environment or air on the moon. That is why when in the Neil Armstrong went to moon in 1970 or 71. I remember that landing of the moon. I was a high school kid that time. So I was up whole night in India to watch that mission. The first time landing of the moon, Neil Armstrong, when he set it foot, I was kind of listening on the radio that whole event, which was almost like what, almost like 55 years ago, something like that. And and now this is the second time almost they have come back without any issue. So this is a big event, and then scientists can do a lot of things there. They want to utilize moon for uh, a lot of other things like making the medicine, semiconductors. There are a lot of things because it doesn't have environment, so it doesn't create any problem which environment creates. And the point I was trying to make that the footsteps of Neil Armstrong, which he left like almost 55 years ago, it is still intact in the sand there. If you go to the moon, you can see his footstep. That is where the first time human being landed on the moon. So, so that's why sometimes people jokingly ask the question that if you walk on the moon, do you think your footprint will stay there forever or not? And the answer is, of course, it will, because there is no environment to change it, no air to change it. I see a new person, Ragini Jha, today. Welcome, Ragini. I guess who is the kid there? I know it is parents' phone number. That's why Ragini Jha is showing up. Yes, sir. Introduce yourself. Okay, sir. My name is Jagas Kumar. I am 11 sixth class. My father name is Mr. Shibira. My mother name is Mrs. Sanadini. My school name is GV Triple. My favorite color name is red color. My teacher name is Alone. I have done, sir. Okay, very nice. Okay, so let's see. I wanted to share some picture with you guys of yesterday's landing of the uh, astronaut in the ocean. Let's see here. So here is on the YouTube. See, when from the flight ship, they go to the on the parachutes,
and then parachute landed in the ocean. You see that picture of the parachute here, and then they were picked up by the American Navy and the NASA team, and and then they are in the medical care. So let's see here. If I open this, we're getting intermittent views of Integrity. let's hope that. So this Big is the cheers NASA. from the viewing room here in Mission Control as See, voice the communication engineers and reestablished scientists with in Commander NASA Reed Wiseman. saw the picture of that. For America and a waiting world, Integrity is 5.5 minutes away from coming home. See, so this is how it looks in space right now. They are coming. Close, close. Passing 100,000 feet now. Range to splashdown 19 nautical miles. Integrity impact to the camera controller fail is no cab 1 views of the chutes. Integrity. Close. We're processing good data through the GPS system. A good view of Integrity. Time to splashdown 4.5 minutes. Now they will show you splashdown. That is called a splashdown. When they eject the ship, and now it is coming on the Earth. See here how it looks like. And now you will see the real splashdown. Yeah, here is called a splashdown. So now astronauts, there is a parachute. Perfect descent rate according to flight dynamics. Good rates on 2 drogues. We see the same on board. On the ground you see is the ocean. Passing through 10,000 feet, still on drogues. Main chute deploy. These are kind of parachutes. They call different technical names. We're at 5,000 feet. Search and recovery beacon has been activated on Integrity. And we have 3 good main chutes. Good 3 main chutes, good reefing, good descent rate. Good rates, and we see 3 good-looking parachutes. Integrity. Cabin pressure indicates no need for hydrazine checks. Integrity copies. This is a perfect descent for Integrity. Its crew sounding hale and hearty on board. Time to splash down 1 minute, 15 seconds. Integrity about to complete a journey spanning 694,481 miles from its launch from the Kennedy Space Center back on April 1st, and a trip around the moon.
One time emoji is good, not several times. So let's see the final landing. Passing through 1,000 feet. Here you go. It's coming. Coming to the ocean. Let's finish, then we'll answer questions. Houston Integrity, splashdown, sending post-landing command now. See, Splashdown confirmed. Touchdown Copy to the splashdown, water. waiting on VLDR. Splashdown confirmed at 7:07 p.m. Central Time, 5:07 p.m. Pacific Time. From the pages of Jules Verne to a modern-day mission to the moon, a new chapter of the exploration of our celestial neighbor is complete. Integrity's astronauts back on Earth. See, now after that they will retrieve them, all the people, all the and if you want to see that, you have to go to another video. There are several videos you can see. Like for example, this one is. It's just everything from the training, but in 3D and absolutely unbelievable. This is incredible. Copy Moonjoy. These are cool guys. Definitely see all of the piece of The Oriental, rocket. Copernicus, easily all in view. This is so awesome. We look like we're smiling at you, like a little Cheshire cat. Thank you, guys. I thought we just caught an ActiWatch sync. If I had my own, I'd sync it with you. Breaking news at this time, you are go for. Now we'll do the question answers. Okay. Any comment or any question from anybody? I think Arthraj, you had raised your hand first, so you go first. Sir, Yes. Uday has also joined. Hello. Yeah. So kids, any question on this launch? Anything you want to comment? Any question you have? Do you have any question about it? About this mission? sir, I have a question. Okay. Sir, what is the difference between glucose and starch? Oh, that's kind of more chemical question. Udaji, do you have any answer for this? I don't Okay. think I know it very well how to differentiate. Okay. Glucose is actually the simplest form of this sugar, and starch is like any carbohydrate that is more complex. So the simplest form of sugar is known as monosaccharide, and anything which is complex is polysaccharides. So the formula for sugar is C6H12O2, and more complex are multiple of this. So leaf will be anything which starch is slightly difficult to digest as compared to glucose. Glucose gives you immediate energy. Okay, sir. Do you get it? So everything Yes, sir. for us to use energy, everything is converted into glucose. Okay, sir. Any other question? No, sir. Thank you, Udaji. My pleasure.
So Aryan is also there. Aryan, uh, yesterday was the your area of interest. Any comment or any observation you might have about it, about the moon mission? No, sir. I am Rudra. Oh, okay, all right. So Rudra, any comment or any question? No, sir. All right. So, uh, so let's talk about then general other things you might have any idea or any presentation you guys would like to do, anything or you want to talk about. Yes, Arthraz, I don't want to show a presentation, but can I do experiment on this? what do you want to do? Experiment. Oh, you want to do experiment? Okay. Yes. Thank you, sir. So I will do it in 2 minutes. Yes, Arthraz, what happened? Where are you? We are waiting for your experiment. Yes, sir, 1 minute. Can you explain to us what is this experiment all about? Yes, sir. Go ahead. Understand why you guys want 2 minutes. And any good reason, or this is a kind of common way in Yes, stock? sir. Hmm. Write about the similar problem that you tried to solve. Okay. So that is a question for you. What did you try to solve?
Can you give us example? Think about something you did in the classroom to relate this question. Any idea? Okay, repeat question one more time, and then we'll ask somebody else if they can answer this question first. Yes, Arthras? Yes, sir. Can I We are do not now? able to see your picture yet. Yes, sir. Now we see it. Okay. So tell us, what is your experiment all about? So now can you see the voting? All right. So thank you, um, Art, for showing this experiment. Let's move to other students. Anybody has anything else to share? Today is your guys' days.
to talk anything you feel like talking about or sharing, or any school project you have done. You know, it's not good that always we, the panelists, talk. It's a good thing that you guys also start talking about things. So, whoever is in the Ragini name, who is there? The Aditya. Aditya. Okay. So, Aditya, do you have anything you want to share from your school science class? You want to know? Do you understand everything in the school in science class? Or do you have any question on any topic? Others. Yes, sir. Yes, sir. Sir, 2 minutes. Yes, sir. No, sir. Fifth. Okay, sir. If you have to, then, sir, your Yes, sir. Yes, sir. Sir, I can't hear you. Sir, in fifth? Yes, sir. Yes, sir.
Yes, sir. Sir, can you repeat? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Sir, our solar system. Yes, sir. Yes, sir. Our solar system has 8 planets. Uh, our yes, we live in Earth. It is also called the blue planet. Uh, um, blue- uh, yes, our solar system consists of 8 planets: um, Sun, Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune, and the dwarf planet Pluto. Uh, yes, sir. Yes, sir. No, sir, sixth. Yes, sir. Sir, sixth. Yes, sir. Sir, 2 minutes. Yes, sir, I had a question. Go ahead. So, sir, I had a question. Like in neutron stars, what happens that the quarks can move freely? So, how does that happen? Well, Udaji, this is deep science, so maybe you can answer his questions. Colleagues is not here. No.
Hello, sir. So, sir, my question Can you was, hear me? Yeah. yes, sir. So, and my Just a question minute. was, There's a grinder. There's a grinder thing or question. okay. Okay. So, Yeah. so Go my ahead. question was, how can quarks roam freely in neutron stars? How does that happen? Actually, what are these? I don't know exact reason. I think because of the extreme pressure, the quarks become free and they are not tied up like normal case. So, sir, like, what happens between the quarks? Like, is there any the deeper explanation? No, that's why I'm saying what I can think of is because of the extreme pressure, the quarks are liberated from the neutrons and protons, so they become free to move. Normal case, the quarks are within the neutrons and protons, so they are uh, confined. They are not able to move freely. Okay, sir. So, so, but sir, in like, whenever we apply very extreme pressures to the quarks, what happens that they use that energy to make newer particles of themselves. So I think so. If the distance between the quarks gets increased, the force will get stronger that is applied by the gluons, and if it gets way too strong, it will just create more quarks. And if it is very close, it will be very negligible. So that can be one of the reason that it may roam freely because they are very close. Possibly. So basically, one thing that I know is that by putting pressure on proton and neutron, the quarks are liberated. So they just move out. That's what was experimented even in that turn thing. So once they become liberated, they are free to move around. Now, what will happen in that case if you apply uh, further pressure on those things? So if you apply pressure on proton, neutron, they make Yes, glucon plasma. That is the earliest state of Big Bang theory. This is yes, what sir. happened immediately after Big Bang theory. Yes, sir. So I don't know if you further apply pressure, what will happen? Because that is the earliest, the plasma was the earliest form on which the universe existed before everything else was formed. Okay. So, uh, sir, have you heard about quantum chromodynamics? Quantum? Chromodynamics. No. Chronodynamics means black and white. Yes, Or sir. chrono is okay. It's about colors and stuff. So, Colors. and color, it depends on the properties of the particle. So, I had read that gluons have eight colors, but I do not understand why, because it should have had nine, because there it uses the three primary colors, uh, red, green, and blue. So I did not understand that reason why it is eight. This is the only thing I can think of is the interaction of nuclear force between those quarks, which must quark and glucon that may be having the color. And the anti-quark have anti-colors. That means the opposite of red, blue, and green. Anti-red, yes. Yeah, so that is supposed to be cyan, magenta, and what is the other one? Say anti-blue, anti-red, like these. Yeah, cyan. There is generally cyan, magenta, and more color is there. Yes, sir. So, sir, there is one more concept in this quantum chromodynamics. It is the chiral symmetry. So, it is the
So uh, it states like that our universe should not be there because quarks should be massless, but that's not the case. So our universe is breaking this symmetry, and I don't understand why. No, okay, so that this particular part I can explain. They say that if there are equal number of what do you call it, bodies and antibodies, what do you call this term? Uh, Quarks and antiquarks. Yeah, quarks and antiquarks. Okay, so if they are equal number, they'll just cancel out. Nothing will exist. So Yes. because they are not perfect, there is some mismatch that takes place, and why? Because of that mismatch, we have all the heavenly bodies in this universe. Okay, so that mismatch happens purely by probability that there are not equal number of quarks and anti-quarks. They don't cancel out each other, and because of this, we have all these heavenly body stars, neutron Yes. stars, whatever you have. Sir, I think so. You're talking about something else. The chiral symmetry is about why do quarks have mass? I think Okay, so. I don't know. It says that quarks should not have mass. Sir, have you heard about that one? No, I have not heard about why quarks have. Why do quarks have different mass? Yes, sir. One explanation that I got was that if we are trying to walk in a river made up of honey, we will feel the drag, and it does not mean that we gained extra weight. Uh, but we are experiencing force. So I think so. That's why the quarks have masses. That explanation I got from somewhere. So I do not know about is that correct or no. But where did you read that quarks do not should not have mass? Quarks have mass, that I know. Why it should not have mass? What is the explanation for this? Why they should not have mass? Okay, sir. Sir, Where did you read? Where did you read that they should not have mass? sir, from the internet, it was about its concept was about right hand and left-handed particles. So if I think so, it was like if quarks had zero mass, uh, they would move at the speed of light, and in this state a left-handed quark will stay left-handed forever and a right-handed quark would stay right-handed forever. Then the universe would treat these teams as completely independent and equal. So this balance is called the chiral symmetry. So but what happens in in our case that these two can switch. So that breaks the chiral symmetry and gives the quarks their mass. Yes. I am not aware about this. I know one thing that quarks have very little mass, but they have mass. Yes, sir. I don't know about this child symmetry part of it, what this thing is, but I know one thing that they have very little mass, and Yes, sir. uh, they interact with each other. They are present in proton and neutrons, and in that hadron experiment, they did demonstrate all these properties of quark. So, sir, like in a particle, like in a proton, how many quarks can there be and how many gluons? Sir, did you get my question? Yeah, I got your question. So I cannot tell you because these things have come up after we have graduated. Okay. So quarks things, how many quarks are there in proton and neutron? So, sir, I've heard that like in the case of a magnet, it has a magnetic field around it. It's an property of it. And in quarks, what happens that near them, virtual particles like virtual gluons are getting
in and out of existence, like they borrow energy from the vacuum and then they have to pay it back, and then what it means that the particle disappears for in an instant. So that means that the particle in that particle there is a lot of quarks and gluons. Okay, so what I can find out is basically proton and neutron have 3 quarks each. Proton is supposed to be 2 up, 1 down, and neutron is 2 down, 1 up. Yes, sir. So that is they have 3 each. I think so. They were called the valence quarks. Yeah, The three they are terminal. 3 primary valence quarks. Yes, sir. So up and down is the primary valence quarks. Apart from that, up and down, they are supposed to be sideways, charm, top. They are different types of quarks. Yes, sir. So Gluon is not a quark; it's totally different yes, it's particle. Yeah. so, sir, like how? So, what is their configuration in the particle? So, are they or is the gluon orbiting the quark, or the other quarks are orbiting themselves and the gluons are orbiting them? Actually, this particular part thing has come up after we have all graduated. So these things have not kept up. Okay. No, sir, I think so. This quark's mass was uh, also answered by Einstein. Einstein was also involved in this, I think so. Einstein spoke about quarks. Um, When did he? The whole concept itself is after Einstein, no? I think so. There are some more scientists involved in this, but I think so. Albert Einstein was the one to answer why do quarks have mass. Okay. So, sir, like, is there any way to know that? Okay, so I'm trying to Google this. Albert Einstein did not answer anything about quarks. Quark model itself was formed in 1964, and Einstein passed away in 1955. 1955. Wait, let Yeah. me. Oh, he died. So the whole concept about quarks came after his death. So Oh, Einstein is nowhere involved in this. sir, I think so. I had read somewhere, but I think so it was wrong. But That's why I'm saying in those days, actually, a lot of things that Einstein had said has been overridden. That even E is equal to mc square, that theory fails because had Einstein known about quarks, he would have modified that equation. yes. Okay, sir. So that's what I'm saying. I didn't know about this, but I'm just putting this thing. Had Einstein because Einstein corrected himself when he met Hubble. So that time itself he said I made a mistake. So he would have again said. So that E is equal to mc square has been challenged purely because of the wave theory. And the whole wave theory has come up because of quarks and other things. Till time they had come up, they were only talking about that everything has a mass. Okay, sir. So what is new physics? That there is no mass in waves? Yeah, there is no mass. Actually, that E is equal to mc square has been modified to add, because E is equal to mc square is based on rest energy. That means nothing is moving. When you say something is moving, then it becomes the E square is equal to mc squared plus pc squared. The pc part takes care of the
Okay. wave theory. Uh, that Very, is, very good. Thanks. Learned something new. So E equal to MC squared is not valid anymore. yeah, it's incomplete. You can say that's incomplete. You have Yeah. to add something more because that was based on that everything is at rest. So when we talk about wave theory, which moves but it does not have mass, then you have to add something to take care of that. Hello, Hello, sir. can you hear me? Yes, sir. Yeah, sorry, I've not been able to join before, uh, but the Pankaj always catch me at the right time. So glad to be here. Okay. Great. So, Could you please introduce a little bit to all of us? Thakurji? Yeah, so my name is Lokendra Thakur. I'm a medical doctor. I'm based in US. Currently, I live in South Carolina, Charleston, South Carolina. I practice internal medicine and critical care and ICU doctor. I also have my own startup company, which I'm running for last 4 years. So we make advanced telemedicine device, and the idea is to bring doctors to every home. Right now, I'm in New York City and driving. So I saw the text and joined. Oh, very nice. Thank you for joining. Uh, Thank you. well, if you are in New Jersey, if you have time, maybe you can swing by to, New York City, uh, New Jersey area. We can meet someplace, have a cup of coffee if you have time. Sure. Like today, so I'm going right now, driving to Manhattan, have a couple of meeting. But Yeah. sure, if I'm in this area, I will do that. Yeah, I'm very close to Princeton, New Jersey. Uh, Okay, so, sir. Sure. yeah, if you happen to. And interestingly, I also used to live in South Carolina for a couple of years in Orangeburg, not far away from Charleston. Yes. Almost 1 hour drive. Yeah, yes. Yeah, We we used to go to beach all the time there while we were in South Carolina. So nice to know. Okay, yeah. so kids, I think you had a lot of medical questions last time. I think not everybody is here, but maybe you can. That is why we asked Pankaj to find you, and so that you could come back. And now he's here. So, kids, I think you were asking a medical question last time. I think last 2 3 meetings that how when we take the medicine how it goes to our body and how like if say for example if you are hurt someplace how it works. So here he is to explain to you if you guys anybody wants to reframe the questions for him, but I remember Sure. only this part. So any student So want to ask him question before he answers us? yeah, go ahead. I'm all ears. sir, I had a question. Uh-huh. Go ahead. So, in bigger animals, they have more cells than us. So it means Mhm. that their chances of getting cancer are higher. So why don't they die early? Yeah. So this question has two part. So you think that because they have more cell, they have a more chances of cancer. You have already assumed that part. Is that right? Yes, sir. That's not true. So what's the Right. reason? So yeah, so let's say the cells, let's say there is a different animal. Bacteria has one cell. Elephant, it lives for more than 100 years. Human, 60 years. Like
turtles goes for 400 years. Turtle is not big. The longest living animal in the world is turtle. Sea turtle can go up to 500 years, but that's not that big, right? Like if you see the dog lives for 20 years, cat lives for 20 years. So every animal has a called age signature. That like when you are born, like if you have fruit fly, you live for 4 hours. So every thing that is born that have genetic marker that gives longevity. So how long someone is live is not dependent on your cell mass. Is that clear? Okay, sir. So what is the, let's say in your heart, a human being, if they have no disease, would you live forever? Yes, sir. No, you not. Even if you have no disease, your heart is going to die in 120 years. That is total age is given to every organ has a age. Oh, So either you die of disease or you die of old age. Do you need to have disease to die? The answer is no. You don't need to have a disease. Everyone has a lifespan. Now coming to cancer. What is cancer? So sir. let's say one cell is growing, and then what happens after you mature stops? If that is continuously growing, cancer. Okay. The reason is internal reason, external reason. If you have a chemical exposure, if there's a hormonal cause, if your food is not there, so there's different reason for cancer. So just to answer your question, if animal has more cell, that doesn't mean they will have more chance of cancer. Another thing is, even the cancer is formed in the body, our defense mechanism controls that cancer. Immunity, like so the same way our body is always fighting with the infection, fighting with the cancer. So just remember, every animal that is born has been given a timeline. And I give you an example. Like so the dog lives for 20 years, cat lives for 30 years, human lives for 70 years. Like elephant has 100 years. So that wise, and this is natural, already planned genetic information that determines how long you're gonna live. If you have a disease, people die early. If you don't have disease, still you're gonna die at one point of time. Did I answer a question? Okay, sir. Anyone else has any follow-up question? This is a good question, by the way, and the answer is very different. Now, someone is asking like, see how it goes in our body. Is that right? Yeah, that was the general question. Several students asked that how, when we take the medicine, how our body knows exactly. Suppose we have a wound someplace and we take antibiotics, and then we expect that one to fix it. So, how does our wounded Yeah, area yeah. know, and how it works? That was the whole question. Okay, very good. So anything that goes in our body anywhere, you take medicine from our food, in that say if we ingest, it get digested, it goes in our blood. From intestine, things are getting absorbed, and then blood flow is like a transport. So then it goes to every part of body. Now, if there is a wound there, the medicine goes there also. If there is a bacteria, that bacteria is killed. But you cannot say that the medicine goes only to that person, that part of the body where is the injury. It is transported from blood to everywhere. Now there is a deeper question here. Let's say if you get injured, there is a defense cell comes there. What causes? It's a chemical signature. And there are a lot of chemicals, especially my 1 year of research was in that. It's called ephrine and EPH. Likewise, there's serotonin, there is a histamine. Any place in the body gets injured, all these chemicals was released, and this chemical attracts the cells, healing cells. But
the medicine that is transported everywhere, and if it goes where it is needed, it works. Was it clear? Kids, you guys have to say. Arthras, you also had this question. Do you understand what Dr. Thakur is saying? Yes, sir. Like, so once you eat, how it goes, like anything that you eat, it becomes your hair, it becomes your nail, it becomes your body, right? So all the chemicals, food becomes a body. There is an intelligence in our body inside, which transforms your bhat dal tarkari to your body. So all this mechanism, our body is so intelligent that if there is injury, they know. If you take medicine, medicine is broken down and brought to the place where it is needed. Okay. Hello, Sir, I have a question. sorry, Lokendra sir. Mhm. Hello, Go ahead. hello. Yeah, I can hear you. ओके ओके देख रहा मैं क्या आर्टिकल पढ़ रहा था जिसके अंदर लिखा था कि हम जो नेचुरल फूड जो खाते हैं तो शरीर को पता रहता है उस नेचुरल फूड से क्या क्या कहते हैं एंजाइम एंजाइम या लेना है या प्रोटीन विटामिन लेना है। बट जैसे बर्गर खाते हैं या फिर जंक फूड खाते हैं तो हमारे शरीर को नहीं पता लगता है कि उसे क्या क्या लेना है, तो इसलिए हमारे लिए वो एज हजार्डस हो जाता है या फिर डेंजर हो जाता है। क्या ये सही है, कैसे क्या है इसका, या कुछ मिलता है उससे प्रोटीन बर्गर से पिज्जा से इनसे? अगर ऐसा रहता तो सारा अमेरिका के लोग मर जाते, क्योंकि वो तो सिर्फ बर्गर खाते हैं। ओके ओके क्योंकि मैं पार्ट किसी का थ्योरी था ऐसे, तो मैंने बोला कि मुझे सही लगा वैसे तो लॉजिकली, लेकिन आप वो हाँ किसी हाँ तो इसमें थ्योरी में ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। तो बर्गर इतना जो बिकता है तो तब तो सबको कैंसर हो जाता फिर। यस 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 हाँ तो पूरा आंसर इज वेरी यूरोपियन क्लियर कि ये बात यस गलत है। यस यस या मैंने उधर मैंने नहीं सोचा, मैंने इंडिया के बारे में ही सोचा मैंने कि जंक फूड खा के लोग बीमार पड़ जाते हैं। मैंने बट एक बात सही है कि देखो, अब जैसे जो खा के बड़े होते हो, जैसे अगर आप गाय को मांस खिलाओगे तो क्या होगा जी, अगर ऐसे, और ये कोई थ्योरी की बात नहीं है, ऐसा हुआ है कि ये क्या करते हैं, गाय को और भैंस को ये मांस की टुकड़े को छोटे छोटे करके घास में मिला के खिलाने लगे। फिर उनको एक डिजीज हो गया, उन डिजीज का नाम है मैड काउ डिजीज, जो कि ब्रेन में सेल जो है तो फूल जाता है। ऐसा बताओ, अगर शेर दूध पीने लगे तो उसका क्या होगा? तो ह्यूमन क्या उसके लिए है क्या, फिर इसके लिए नॉनवेज के लिए है क्या? हाँ, तो होता क्या है, सब जैसे सारे एनिमल की ये भी लिखा हुआ है, इसलिए शेर मांस खाने के लिए बना हुआ है, गाय जो है घास खाने के लिए बना हुआ है। अगर उससे अगर आप दूसरा फूड दोगे जो उसके लिए नहीं बना है तो उससे डिजीज होता है। तो चलते चलते जरा ये बता दीजिए कि हम लोग जो मनुष्य जाते हैं हम लोग के लिए क्या रिकमेंडेड फूड है नेचुरल? हाँ बिल्कुल, वेजिटेरियन फूड, फ्रूटेरियन, इस पे भी रिसर्च हुआ है। कहते हैं कि कोई एनिमल किस चीज खाने के लिए बने हैं उसके दांत से पता चलता है। तो हम लोग अभी साइंटिफिकली ह्यूमन बीइंग इज क्रिएटेड एज अ फ्रूटेरियन, फ्रूट खाने के लिए, वेजिटेबल खाने के लिए। तो फिश की तो खा सकते हैं कि मैथिल लोग, फिर मैथिल लोग को परंपरा में है फिश खाना। और देखो, इसका भी बहुत बड़ा कारण है, मैथिल और बंगाली फिश खाने लगे कि यहाँ पे इतना सूखा पड़ा, ये सरस्वती रिवर लोग थे वो फिश खाने लगे, नहीं तो बच ही नहीं पाते, खाना ही खत्म हो गया, बहुत लोग मरे। तो 10 लाख भूखा से मर गए। उस टाइम पे दूसरा उपाय नहीं था ब्राह्मणों को, तो मैथिल और बंगाली फिश खाने लगे। इसका कल्चरल रीजन है, दिस इज कल्चरल रीजन, नॉट अ साइंटिफिक रीजन। तो बेसिकली इन्होंने बताया कि जैसे मैड काउ डिजीज हुआ था क्योंकि एनिमल्स जो हैं वो वेजिटेरियंस होने चाहिए नेचुरली, लेकिन उनको मीट खिलाया गया तो उसके चलते जो है ब्रेन में कैंसर हुआ और उसको मैड काउ बोलते हैं। उसी तरह से हम लोग एक्चुअली वी वर डिजाइंड टू बी वेजिटेरियंस, बट हम लोग जो खाते हैं
तो ये सब जो खाते हैं उससे मीट मछली वगैरह, तो आई एम श्योर कि दैट इज इम्पैक्टिंग आवर बॉडी सिस्टम। क्या कहना है आपका, जरा समझाइए बच्चों को। बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे नेटफ्लिक्स में एक हाँ एक साइंटिस्ट 6 जगह पे गया जहाँ पे सबसे ज्यादा लोग 100 साल से ज्यादा जीते थे। हाँ उनका देखा कि उनकी क्या बिहेवियर है कि ये 100 साल से ज्यादा जीते हैं। तो इनमें 3 चीज उन्होंने सब में कॉमन पाया। पहली फर्स्ट चीज, वो लोग चलते ज्यादा थे, पैदल चलते थे ऊपर नीचा ज्यादा। दूसरा, उनकी जो फ्रेंड सर्कल थी वो बहुत बढ़िया लोग दोस्तों से मिलते थे। तीसरा चीज, वो खाते थे वेजिटेरियन। हाँ और उस वेजिटेरियन में भी ये दाल की जो बात है ना, लेगुम कहते हैं, दाल, ये क्या कहते हैं, ये चना वगैरह लगूम खाने वाले। So these 3 things gives the longevity, and this is proven. And anyone can watch that series in Netflix. It's called Secret of Blue Jones. ओके, तो हियर यू गो। डॉक्टर साहब ने आप सबों को बता दिया बहुत सारी चीजें। अब आप लोग सोचिए कि कैसे इसको हम अपने लाइफ में करें। और डॉक्टर साहब, you should come on the regular basis because we get a lot of science, this medical science questions, and Sure. तो थोड़ा सा पैनल में आपकी जरूरत है। जब भी मौका लगे, अगर बीच बीच में आया कीजिएगा, तो जो भी क्वेश्चंस एक्यूमुलेटेड होंगे वो हम लोग जो है एक बार में बच्चों को बता सकेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। ओके, I would love to. या, थैंक यू। You're welcome. ड्राइव सेफली। बहुत अच्छा किया आप आ गए। वेरी। तो पंकज, आपका टाइम भी वैसे हो गया है अब टू क्लोज द मीटिंग, क्या कहते हैं? Sir, can I Anybody have ask any the more last questions question? or any more questions on physics Yes, and sir. health science? We have two experts here today. तो आई हैव टू टेक लीव, मेरे को कोई काम था अभी। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक है, Yes, थैंक यू। sir. Sir, like Lokendra sir told that every body part has a fixed age. Then what about that we change every body part from a certain of age? Yeah. Can someone clarify this question? I did not get it. So like, So, you have to explain your question. He didn't get clearly your question, so so sir, expand it. What you are trying to ask. so sir, he's trying to say that what would happen if we change our organs at some given time? So would that increase our lifespan? yes, good question. Yes, we do change a question. So there is many transplant. Kidney transplant is very common. If your kidney is failed, you can get a kidney from other people, and that do increase lifespan of all the kidney disease. Likewise, we have a heart transplant. Someone heart is bad, and that heart transplant is going on for 20 years now, more than that. Then you have many organ, pancreas transplant, they have a liver transplant. So yes, if the organ is disease, if you change it, it increases your lifespan. I don't know how is it India, but do you know in America, we most of the people here, we sign that we can donate our body parts when we die. You have to sign. And so what happens is that when you die, your body, any useful parts which can be transplanted to any other needy person in any place, I think that gets taken out. डॉक्टर साहब, जरा इस पर भी थोड़ा बताइए बच्चों को, क्या होता है वो जब लोग डोनेट करते हैं बॉडी पार्ट्स, हाउ इट वर्क्स। बिल्कुल. Yes, so now the question is how our body part works. How no, how the transplant works? Like suppose if somebody is dying and they have donated their body, then how you guys extract the body parts from that person who is dying and use it for other person who need it replacement. Correct. So this is my expertise. I work in ICU.
So anyone, yes. So anyone, like, there are two kind of death. Let's say your heart stops and then you die. Within 8 minutes, if your heart stops, your brain doesn't get the flow and people start dying. But there is another type of death, it's called brain death. Means, like, your heart and lung is functioning, but your brain is completely gone. So what happens for a body transplant? You can take the organ if the blood flow is still there. If someone is dead for more than 20 minutes, you cannot take this body part. So you have to get the organ at the time when there is some blood flow going. And how do you preserve it? Suppose you don't have, But to simplify, someone had a bad accident and he is in a coma. In the coma, there is a thing like, oh, brain is not going to recover. In those patients, we take the organ parts. Now, you were telling about driving license, and you say, like, are you organ donor? Like, my wife is an organ donor. So if she has an accident and if she has a brain death, they will take her organ, anyone. So liver, kidney, cornea, all those. If it is taken fresh, within 20 minutes of death, it can be transplanted to other body. so within 20 minutes. So only 20 minutes is the life of it. Like, I was thinking that maybe you guys can preserve, say, heart for a while, longer time in hospitals, and then you can use it. So that's not the case then, right? It has to be immediate transplant. If you extract it, the extraction needs to happen within 20 minutes or 30 minutes. Yeah. And then you can freeze it. If you freeze it in a minus 92 degree Fahrenheit, then you can keep for a long time. Okay. So most of the time, natural death, you cannot have an organ except like skin and cornea, other stuff. But brain death, if the brain is severely damaged, we can make that brain death people alive for a long time by medicine, and then we can take the organ and freeze it. Very good. So you guys learned, I also learned, and you guys learned about how the body parts can also be reused from one person to another person, right? So any of you want to become a doctor in future, here you go. These kind of things you will do. Rather than simply changing the tire in the car, you can replace the body parts from one person to another. Yes, it's very complicated and very expensive. There is a called transplant body. So like people, especially liver failure patient, they are waiting in line for the transplant. Like in India also does a lot of liver transplant, kidney transplant, heart transplant also. So India is growing in this part. Okay. So in India also people are donating body parts, or this is considered a kind of bad thing in India? No. India has a very good organ transplant places. India is actually growing in this. Oh, okay. The sound was not very clear. Can someone clarify this question? Yeah. Yes. So why is this though? What we say. Yeah. So our ancient culture says, what you are is not your body. Body is made of 5 elements. Like earth, fire, water, and so you're dead, it has to go back to there. So that's why we burn our body. And they say when the body is born, then your soul is free. It can get reincarnation in another body. That is a Hindu belief. But if you say the Christian, they say, oh, you guys are cruel. How can you burn your parents, grandparents, yourself? So
culturally, actually, if you can donate, the Hindu religion is the one. If you donate, that will be the big punya. You are not just burning; you are giving to other person. That's, so Hinduism is one religion who should be transplanting, because body is anyway is going to be burnt down. Yeah. The problem is for Christian and Muslims, right? They want to preserve it. They think that one day Jesus Christ will come and everyone will be stand up. But Yeah. if you donate your heart, then you cannot stand up. Very interesting. Pankaj, Right. I think we didn't understand. I didn't understand your full question. Maybe Dr. Sahab understood. What was actually your question? I didn't get it. What you were trying to ask? Uh-huh. नहीं, मैं समझ गया था ये बात को, अच्छा, लेकिन ये बात ये बात गलत है। जिस चीज को आप जला रहे हो, क्योंकि आप समझ रहे हो इसका यूज नहीं है, Yeah. 48 घंटा के बाद में बॉडी में गंध आने लगती है, वो सड़ने लगता है, इसीलिए हम कहते हैं इसको जला दो। 48 hours. Yeah. 48 आवर्स में सड़ने लगता है, तो कहते हैं इसको गंध रखना नहीं है, इसको जला दो। अग्नि जो होता है शुद्ध होता है, तो इसको जला दो। अगर इसको यूज कर पाए तो, और भगवान तो कहेंगे चलो इसका भी यूज हो गया। या बिल्कुल सही बात। नहीं, तो लाइफ तो नहीं, देखो हिंदू में लाइफ की मीनिंग 3 होती है। एक आपकी बॉडी है, एक आपकी मनस है, और तीसरा आत्मा है। तो कहते हैं बॉडी एंड जो होता है वो क्षयमान है, उस अगर वैसे दोगे वो तो सड़ जाएगा। और जैसे कि आपका मन और आत्मा जो है वो दूसरे बॉडी में जाता है, तो इसको जलाओ या किसी को डोनेट करो, हिंदुइज्म में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये बॉडी है, बिल्कुल। ओके। बिल्कुल, हाँ, ये बात भी ठीक है। अगर हमारे में थोड़ा चांद बाकी है, दूसरे को दिया, फिर वो उसमें भी तो मरेगा ही। अरे भाई, जितना दूसरे को काम आ जाओ, अपने यहाँ कहावत है। देखिए, मेरे को याद आ गया वो श्लोक, अपना पुराणिक श्लोक है, उसमें लिखा है, अष्टादश पुराणानां व्यासस्य वचनं द्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम्। इसको हिंदी में बोलेंगे तो ये कि हमारे जो 18 पुराण है, स्मृति जिसको हम बोलते हैं, उसमें 2 ही बात व्यास जी ने कही है। व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकाराय पुण्याय, परोपकार में पुण्य है, पापाय परपीडनम्, दूसरे को जब आप पीड़ा देते हैं तो उसमें पाप है। तो बिल्कुल ये अच्छी बात है कि आप अपना बॉडी पार्ट डोनेट कीजिए, ये तो हो गया। परोपकाराय पुण्याय, बिल्कुल डॉक्टर साहब ने जो बताया, ये पुण्य का काम है, एकदम परफेक्ट। ये तो शास्त्रों का वचन है कि आप डोनेट कीजिए। अरे अपने यहाँ एक ऋषि थे ना, क्या नाम था उनका, इन्होंने अपना बॉडी पूरा वज्र बना था, मैं नाम बोल रहा हूँ उनका, कौन थे ऋषि, अत्रि या कोई थे, जिनके बॉडी के पार्ट से, हड्डी से जो है वो इंद्र ने वज्र बनाया था किसी राक्षस को मारने। हाँ, तो यस, हमारे यहाँ तो ट्रेडिशन रहा है बॉडी पार्ट्स डोनेट करने का। ये सबसे बड़ा साइंटिस्ट एनाटॉमिस्ट तो गरुड़ पुराण में लिखा हुआ था, इतना हेयर है, वो तो एनाटॉमी का बुक लगता है, गरुड़ पुराण। अच्छा, क्या समझाइए, क्या उसमें बात है जो आप लोग साइंस में उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, क्या लिखा है गरुड़ पुराण में? ये वो सब कुछ लिखा हुआ, कितना हेयर है, कितना बॉडी पार्ट है, ये सबको एक्सप्लेन किया हुआ है।
वो तो बुक है, ऑब्जर्वेशनल स्टडी ऑफ ह्यूमन बॉडी. अच्छा, so that matches with scientific thoughts. There is a variation, but this was an attempt done 5,000 years ago. That makes a big sense. That people, Hinduism, these guys were so advanced. They were counting every hair in a human body. Oh wow. Okay. So now you explained that initially, yes, India was very ahead in science in every field, right? Medicine में हो गया और इस सब में हो गया, yoga हो गया, but I don't know why we stopped thinking in that line. बीच में हम लोगों ने No, we did not. It's a lot of external thing, right? Muslim came, destroyed the culture of study. Then British came, then they put all the new design, everything. So Yeah. external invaders, they destroy the ancient culture. Yeah. Okay. So basically, I mean, yeah, I mean, because ये तो है ही कि जब कोई भी साइंस या फिलोसफी या लिटरेचर किसी की बात होती है कि वेयर वाज द फर्स्ट ऑब्जर्वेशन डन, तो उसमें इंडिया का नाम आ जाता है. इंडिया, ग्रीस, 3-4 कंट्री का ही तो नाम आता है, और इंडिया इज ऑलवेज देयर, चाइना. So that's so initially we were very good in science. बाद में जैसे बता रहे हैं कि basically external regions we stopped thinking, और फिर हम लोग जो है वो अंग्रेजों ने हम लोग का पूरा ही हाथ काट दिया कि आप लोग कुछ बना नहीं सकते हो, खरीदो. हमारा सामान खरीदो. हमारा सामान खरीदो. अब हम यही कर रहे हैं, कार लेके आते हैं, सब कुछ उन लोगों से लेते हैं. बट नहीं, इंडिया फिर से अच्छा हो रहा है. अभी देखो, वाद विवाद की जो बात है, वाद विवाद शब्द was created in India. The way debate should be done. And then there was a rule of debate कि आप दूसरे की सुनो, समझो और को बताओ कि मैंने समझ लिया, फिर अपनी बात रखो. That system was created 5,000 years ago. Yeah. Very nice. Very nice. तो अब तो लगता है हम लोग पैनलिस्ट ही बच गए हैं. अर्थ, do you have any more questions for Dr. Sahab? Yes, sir. Yes. Go ahead. You have one-to-one with Dr. Sahab. You are the only one student. Oh. So, like in Hinduism, it is said that when Krishna Bhagwan's body was put in the fire, his heart was still beating, and that was kept in the Jagannath Puri temple. So it is true by scientifically. Can someone clarify this question? Sorry, this is like I heard that Krishna's body was kept in Jagannath temple Puri. Is that right? हिंदी में बोलो अर्थ, हिंदी में समझाओ उनको सवाल. हिंदी में बोलो ना अर्थ, क्या तुम पूछ रहे हो? ओके सर. सर कब कृष्ण भगवान का शरीर जलाया गया था, तब बोला जाता है कि उनका मतलब जो दिल था वो धड़कते ही रहा, और फिर जब दिल धड़कते रहा तो एक पंडित उसको लेके जगन्नाथपुरी के टेम्पल में उस दिल को रख दिया. अच्छा, तो बहुत बड़ा डॉक्टर था फिर. तो देखो, नहीं मैं बताता हूँ, हिंदुइज्म में सबको जलाने के लिए नहीं कहता है. हिंदू में जो ऋषि होते हैं उनको जलाया नहीं जाता. जो कभी शादी नहीं करते हैं उनको भी नहीं जलाया जाता. बचपन जो होता है, 12 साल के बच्चे अगर मर जाए तो उसको भी नहीं जलाया जाता. तो ये हिंदू में सबको जलाना ये रूल नहीं है. अगर कोई कहता है तो देखो, इसमें शास्त्र पढ़ने की बात है. अब कहो कि ये रोगी इस ऋषियों को क्यों नहीं जलाते? कहते हैं कि ऋषि का जो शरीर होता है वो उनकी जो बुद्धि से पहले ही शुद्ध हो जाता है, तो उनकी जलाने की जरूरत नहीं है. इसीलिए श्री कृष्ण, he was an incarnation, and he was also yogi and the incarnation of God. So those people are not burnt, they are kept the way they are. तो हाथ चलता रहे या नहीं चलता रहे, जब ऋषि और बड़े विद्वान जब
कि जो लाइफ जब वो उनकी देहांत होती है तो उनको बॉडी को नहीं जलाया जाता। तो Is it clear? सो अर्थ इसका मतलब ये हुआ कि एक्चुअली कृष्ण भगवान के बॉडी को जलाया नहीं गया था, और इसीलिए उनके हार्ट को एक्सट्रैक्ट करके उस पंडित जी ने जगन्नाथ टेम्पल में डाल दिया। क्वाइट पॉसिबल, वन ऑफ द हाइपोथेसिस। सर लेकिन उस टाइम पे इतना मॉडर्न टेक्नोलॉजी तो नहीं था जो हार्ट ट्रांसप्लांट हो सकता था, तो ये कैसे हुआ? नहीं होगा। मॉडर्न टेक्नोलॉजी ये कहेंगे ये बात झूठ है तब तक। अच्छा, तुम ये कैसे कह सकते हो? मैं तुमको दूसरा एग्जाम्पल देता हूँ। जब पार्वती जी स्नान कर रही थी तो उनका एक बेटा जो था गणेश, वो गार्ड कर रहा था और वो गार्ड कर रहा था, और तभी शिव जी आ गए वहां पर। तो शिव जी ने कहा कि मेरे को घर जाने दो। उसने कहा, गणेश ने कहा कि मैं तो आपको जानता नहीं हूँ। कहा नहीं नहीं नहीं, ये मेरा घर है, मेरी पत्नी है। कहा नहीं, मेरी माता जी अब स्नान कर रही है, अभी कोई नहीं जा सकता है। इस पर शिव जी को गुस्सा आ गया। शिव जी ने उसका गर्दन काट दिया, अपना, जो कि उनका बेटा ही था गणेश। उसके बाद जब ये हुआ, फिर पार्वती स्नान करके जब आई बाहर तो देखी, करे यहाँ तो बात काट हो गया है। फिर वो चिल्लाई रोलाई, गई क्या किया तुमने, ये तो अपने बेटे को ही काट दिया। तो बहुत हल्ला हंगामा के बाद जो होता है घर में वो हुआ। तो फिर शिव जी बोले, अच्छा कोई बात नहीं, चिंता मत करो, मैं इसको जिला देता हूँ, मैं इसको दूसरा सर इसमें डाल देता हूँ। मैं जाता हूँ, जरा जंगल में देखता हूँ, जो भी मुझे मिल जाए उसको लेकर के उसको ट्रांसप्लांट कर दूंगा इसका हेड। तो उनको जाते जाते उनको एक बच्चा हाथी दिखाई पड़ गया। उन्होंने उस बच्चे हाथी का जो है गर्दन काट लिया और ले आकर के उसको ट्रांसप्लांट कर दिया गणेश के ऊपर में। इसीलिए गणेश अभी ऐसे दिखते हैं। तुम तो सोचो, तो ट्रांसप्लांट पूरा उन्होंने गर्दन के ऊपर का भाग कर दिया। अब ये है कि अब डॉक्टर साहब से पूछो कि ये पॉसिबल था कि नहीं पॉसिबल था। क्या एक और क्वेश्चन है सर। नहीं नहीं नहीं, मेरा एक सवाल का जवाब दो। अब जब इसकी बात हो गई है, आप ही के सवाल पे एक और सवाल हम पूछना। अच्छा पहले हमारा सवाल तो सुन लो। मेरा इसके साथ कहना यह है कि जब हम लोग अब गणेश की जो पूजा करते हैं उनको हाथी वाला सर के साथ, तो should we do that or not? That is a supplementary question. अब तुम अपना like see, so here there needs to be understanding about your question only. This बोलो। देखो, wait so and let me answer Ganesh का question का आंसर करने दो। Like see what happens, so this called mythology. So mythology is not realistic. इसको you have to understand the theme of it. No, if someone tells you, oh my god, you are like a lion, means they are saying that you are powerful like lion. It's not saying that you're going to start walking on 4 foot. So इसमें मध्य मर्म को समझना जरूरी होता है। इसमें it's not like exact reality what is happening. Symbolic है। Yes, so you have to understand the meaning of symbol. You cannot say realistic. जैसे ये बच्चे पूछ रहे हैं ना कि उनको डाल दिया मंदिर में, yes this possible, क्योंकि ये योगी थे और उनका हाथ जब चल ही रहा था, you know this you cannot say. अगर हाथ चल रहा तो फिर उनकी ध्यान की हो गई। तो जब भी आपको आत्मा से बॉडी निकलती है सब ऑर्गन बंद हो जाता है। तो ये जो है माइथोलॉजिकली लोग जो कहते हैं एक कान दो कान महान की बात होती है, but there is always a meaning behind all this story. ओके अर्थ, अब बोलो तुम अपना सवाल क्या है। सर जैसे आप बोले कि शिव जी एक हाथी का सर काटती है, तो शिव जी को पाप नहीं करा कि हाथी का सर जो काटे? नहीं समझ पाए हम तुम्हारा क्वेश्चन। डॉक्टर साहब आप समझे क्वेश्चन क्या है? आप बोले ना कि मतलब शिव जी एक हाथी का सर काट लिए। हाँ, तो शिव जी को पाप नहीं चढ़ा? शिव जी तो वेरी गुड क्वेश्चन। अब ऐसे देखो, अगेन इस क्वेश्चन को इस तरह से समझो, आदमी और भगवान में क्या फर्क है। आदमी कहते हैं कि वो ये बहुत महान है, तो भगवान का कुछ अर्थ होता है, वो तुमको नया जीवन दे सकते हैं, ये फर्क होता है।
शिव जी भी आदमी के जैसे दिखते हैं, कृष्णा भी आदमी के दिखते हैं, लेकिन कृष्णा भी जीवन दान दिया था ये पांडव के बच्चे को। तो भगवान तुमको जीवन दान दे सकते हैं। इसका अर्थ ये है ना, पाप और पुण्य की बात है। देह की मरने से किसी को पाप, हाँ अगर मनुष्य होके आप मनुष्य के मारते हो तो पाप लगते हैं। भगवान जो करते हैं उससे आपकी उद्धार होती है। तो इसको दूसरे शब्द में ले लो अर्थ, तो वो जो हाथी था भगवान के पास में तो पावर है। उन्होंने कहा कि अच्छा तुम्हारा मैं सर काट लेता हूँ, लेकिन तुमको मैं स्वर्ग भेज देता हूँ, तुम्हारा लाइफ ओवर, तुम्हारे इस जीवन का जो कार्यक्रम है। उससे भी हाँ, उससे भी क्या कहते हैं, अगर जैसे जिसका हाथी का सर काटा हुआ, उसका पुनर्जन्म उससे भी उच्च कोटि में होगा, मनुष्य बन के होगा। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, तुम अभी हाथी थे, तुमको हम मनुष्य के रूप में देते हैं, और चलो तुम गणेश जी के रूप में ही जिंदा हो जाओ। वो हाथी जो है, समझो कि एक तरह से गणेश जी के बॉडी में जब उसका लग गया हेड, तो उधर तो मरा, लेकिन गणेश जी के रूप में जिंदा हो गया, तो पुण्य हो गया। शिव जी का बेटा ही भगवान बन का गया बेटा वो। बन गया। क्या बोलते हो अर्थ? तो पाप कहाँ से होगा? इसमें तो और फायदा ही फायदा हो गया, हाथी को भी फायदा हो गया, शिव जी को भी फायदा हो गया, क्या बोलते हैं गणेश को, और गणेश की माँ पार्वती को भी फायदा हो गया, इसलिए सब पुण्य का काम था। हाथी से मनुष्य बन गया। हाथी से मनुष्य बन गया। बट यस उस हाथी का अर्थ, अब और दूसरा सवाल पूछो, और भी कोई है पूछने के लिए? या हाँ, दिव्य दृष्टि। हाँ सर एक बार हम जगन्नाथपुरी गए थे, तो हम देखे थे कि उसका जो फ्लैग था ना ऊपर का, वो कैसे नॉर्थ में जा रहा था तो वो साउथ में जा रहा था, ऐसा। No, I didn't understand the question. सर इस बार हम जगन्नाथपुरी गए थे तो देखे थे कि जगन्नाथपुरी टेम्पल जो है वो हवा वो उसका जो टेम्पल का वो है ऊपर ध्वज, वो हवा के उल्टे डायरेक्शन में मतलब चल रहा था। कैसे हवा अगर नॉर्थ की तरफ जा रहा है तो साउथ की तरफ जा रहा है, ऐसा क्यों? और ये रियल है? ये आपको फिजिक्स वाले आंसर देंगे, लेकिन पहले मैं बताऊं, मैं जगन्नाथ, कोई आश्चर्य की बात नहीं है, और इसकी समझने की भी मुझे कुछ ज्यादा सोच नहीं लगती है, बट फिजिक्स वाले बताएंगे। ओके सर। बट समझ लो, मनुष्य में और भगवान में ये फर्क है। वो मनुष्य जैसे दिखते हैं, लेकिन वो जीवन दान दे सकते हैं, वो आपको इच्छा पूर्ति कर सकते हैं, वो आपकी कर्म जो है ना, खराब कर्म, उसको हटा सकते हैं। तो वही फर्क है आदमी और भगवान में, देखने में ना हो बट शक्ति में फर्क है। सर तब तो मतलब क्या बोले, हाँ बोला जाता है कि जगन्नाथपुरी में जो भी जाता है उसका पाप धुल जाता है, तब तो सब जगन्नाथपुरी जाएगा, और तब तो नरक में कोई जाएगा ही नहीं। हाँ देखो, अगर कोई जगन्नाथपुरी जाता है पाप धोने के लिए, तो उसने बहुत मेहनत करी ना वहां जाने के लिए। तो जैसे आपके पाप धुल जाता है तो फिर से आप खराब नहीं हो जाते हो। पाप धुलने का मतलब होता है कि आप अब बुरे इंसान से अच्छे हो जाते हो, तो फिर आप पाप कर ही नहीं सकते। अगर पापी फिर से पाप करे तो उसका पाप नहीं धुला। अब समझ लो, आप गए गंगा स्नान के लिए, गंदा कपड़ा पहने थे, जब गंगा में डुबकी लगाए तो आप शुद्ध हो गए, फिर से जाए अब तो फिर से पापी हो गए आप। तो अगर फिर वो कपड़ा फेंक दिए? हाँ, तब फिर आप आपसे बुरा बुरा काम कर ही नहीं सकते। तो जब आपकी पाप धुल जाता है तो इसका मतलब ये नहीं। सब आदमी थोड़ा सा मेहनत करके चले जाएगा, नहीं तो गंगा ही स्नान कर लेगा,
तब तो कोई नरक में जाएगा ही नहीं, तब यमराज भगवान का क्या मतलब है? नहीं, बिल्कुल सही बात है। सब That's a good question. नहीं तो ऐसे करो, जो बूढ़ा आदमी है उसको पकड़ के बांध के ले जाओगे, तब से नहीं होगा। अपने मन से जाना पड़ेगा लोगों को पाप धुलाने के लिए। सर तो कौन आदमी जाना चाहता है नरक में जो अपना पाप नहीं धोने जाएगा? नहीं, ये बढ़िया क्वेश्चन है। सब कोई भी नरक में नहीं जाना चाहता है, लेकिन सब खराब काम करने के लिए आतुर रहता है। मतलब तो आप कहते हैं कि सबको स्वर्ग में जाना है, लेकिन वो मरना नहीं चाहते, तो कैसे जाएंगे स्वर्ग में? वैसे ही हो गया। आप नरक में नहीं जाना चाहते हो, लेकिन अच्छा काम नहीं करोगे तो कैसे होगा? अच्छा काम करोगे तब तो स्वर्ग जाओगे ना। सर तब तो बेकार काम करके भी एक बार गंगा स्नान कर लेंगे मरते ही वक्त तो। हाँ, वो भी ठीक है। अगर बेकार काम किया लेकिन बाद में जाके अच्छा काम किया ना, वहां पे जाके सर कहते हैं किताब लिख। तब बोलो बोलो। जैसे कैसे कोई आदमी मरता रहा और उसको अपने आखिरी सांस में गंगा में डुबकी हाँ, लगा के उसको फिर कभी कपड़ा ही नहीं पहनाया गया, तब तो वो मतलब जा सकते हैं? ये बोलो बोलो। तब तो वो कितना भी पाप किया होगा जिंदगी में, तब तो वो जा सकता है। अच्छा, ये बताओ, लोग पाप करते क्यों है? क्योंकि पाप हमारे देह में लगा हुआ है। देखो, पाप खराब काम करने में लोगों को मजा आता है। जैसे आप मांस खाते हो, किसी को पिटाई करते हो, तो किसी का आप बुरा सोचते हो। होता क्यों है ये? क्योंकि जीने के लिए लोग को करना पड़ता है। नो, ये सर खरा असली अच्छा काम करने के लिए ज्यादा मेहनत होता है। बुरा काम करने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ता है, इसीलिए लोग बुरा काम करते हैं। आप एग्जाम में जाते हो, पढ़ाई करो। हाँ हाँ, एग्जाम, बिल्कुल बिल्कुल सही बात बोला आपने। कहते हैं जैसे कि आपको पढ़ाई करके अच्छा नंबर लाने में मुश्किल है, लेकिन चीट चोरी करो, फटाक से हो जाता है। तो बुरा काम करने में आसानी है, इसलिए सब बुरा काम करते हैं। सर तब तो ये भी बोला जाता है कि मरते वक्त राम राम कर लेते तब भी मतलब नरक में नहीं मिलता है, तब सब आदमी गंगा भी क्यों ही जाएगा, डायरेक्ट घर ही पे राम राम करके मर जाएगा। बिल्कुल, राम राम करने में बहुत मेहनत है बेटा। अब फिल्म देखने में बहुत आसानी है, लेकिन राम राम करके देखो 2000 बार, तो आपके दिमाग इधर से उधर भागेगा। राम राम करना आसान नहीं है। तो हम तो लगभग हर रोज जपते हैं राम जी का नाम। हाँ, आपको कहते हैं 70 लाख जाप करोगे फिर आपको फल मिलता है। लोग 70 साल में मुंह थक जाते हैं, लोग 70,000 में। ओके सर। It's all religious question. It's a good question though. It's a very natural question too. हाँ, बताओ। Yes, go ahead. हाँ, हाँ, अर्थ। बिल्कुल बढ़िया बात। हाँ, चलो अर्थ, तुम जो ध्वजा वाला सवाल किए थे, तो ये समझो जो जो विंड जो है, तुम जमीन पर तो अब खड़े होते हो, तो जमीन पर की जो विंड की फ्लो है वो तुमको मालूम है। मंदिर तो 5 मंजिला के बराबर होता है ऊपर में, तो ऊपर के लेयर में जो विंड चल रहा है वो नीचे वाले जमीन पर की विंड की डायरेक्शन में ही हो, कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि विंड के अलग अलग लेयर्स हो जाते हैं जो जो ऊपर जाते हो। ठीक है, सर तो ठीक है, तो एक आपका वो हो गया, तब
जगन्नाथपुरी टेम्पल का चाय क्यों नहीं, वो क्यों नहीं बनता है चाय दो? क्या 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 बोले फिर? जगन्नाथपुरी टेम्पल का शैडो क्यों नहीं बनता है? और एक और क्वेश्चन सर, क्योंकि हम एक बार गए थे तो हम देखे जगन्नाथपुरी टेम्पल से घुसने से पहले आपको वे बहुत ज्यादा वाला आवाज कटा, लेकिन आप कैसे ही घुसिएगा जगन्नाथ टेम्पल में, पैर ही रखिएगा तो आपको आवाज मतलब वो आना बंद ही हो जाता है डायरेक्ट। ये सब फिजिक्स का क्वेश्चन है और फिजिक्स में आंसर है इसका, भले ही तुमको नहीं मालूम है, हमको नहीं मालूम है, लेकिन इसको एक्सप्लेन किया जा सकता है। तो इसलिए इसको जरा हमें रिसर्च करने की जरूरत है। लेकिन ये जितने भी तुम्हारे सवाल है, ये क्यों वो ऐसा नहीं होता है कि भगवान की कृपा से जो है ध्वज ऊपर में दूसरे डायरेक्शन में जा रहा है। हमारी अंडरस्टैंडिंग तुमको पता नहीं है, क्योंकि वो बस हो गया एयर का जो है फ्लो अलग अलग लेयर में अलग अलग होता है। हो सकता है ऊपर वाले लेयर में जो है विंड का डायरेक्शन कुछ और हो जो तुम जमीन पर कर रहे हो। एक तो ये सवाल हो गया आंसर। दूसरा तुम सवाल क्या था तुम्हारा? एक और कुछ, शैडो क्यों नहीं होता है, ये दूसरा सवाल था। तो शैडो जब सपोज करो कि हो सकता है तुम दिन में 12 बजे गए होगे, 12 बजे में अगर तुम दिन में जाते हो कहीं पर तो क्या होता है, तुम्हारा शैडो कितना सिकुड़ के ऑलमोस्ट नगण्य हो जाता है, तुम्हारे नीचे ही आता है, क्योंकि सूरज डायरेक्टली तुम्हारे ऊपर में होता है। शैडो तो तब होगा ना जब ऑब्जेक्ट नहीं सर, आप कभी भी जाइएगा वहाँ पे शैडो नहीं बनेगा। तो ये नहीं बेटा, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। अगर तुम इस चीज को बड़े बना रहे हो ना, इसकी बड़ी कोई चीज नहीं है। ये जैसे कह रहे हैं कि ये फिजिक्स की क्वेश्चन है, इससे कोई महानता प्रूव नहीं होती। हाँ, महानता प्रूव होती है कि आप वहां पे जाओ और एकदम बूढ़े आदमी से अच्छे हो जाओ, उसकी महानता है। ये शैडो, ये विंड की डायरेक्शन की उतनी कुछ महत्व नहीं है बेटा। ओके सर। लेकिन देखो अपने यहाँ क्या होता है, रिलीजन में बहुत सारी बातें जो हैं वो बच्चों को सब या बड़ों को भी समझाई नहीं जाती है, इसलिए उनको पता नहीं है। तो कुछ तो लॉजिकली साइंस से मिलती जुलती बातें हैं, कुछ लॉजिकली साइंस से मिलती जुलती बातें नहीं भी हैं, दोनों तरह की बातें होती है वहां पर। तो हम लोग जो है उसको एनालाइज करके देखते हैं कि क्या साइंटिफिकली पॉसिबल है क्या नहीं है। अब जैसे मान लो हनुमान जी जो है, हनुमान जी के बारे में हम बोलते हैं कि श्रीलंका वो फ्लाई करके गए। तो अब मॉडर्न साइंस में तो हम मानना मुश्किल है हम लोगों के लिए कि कैसे कोई फ्लाई कर सकता है। हो सकता है कोई और उनके पास इक्विपमेंट रहा हो जिसके बारे में हम लोग को जानकारी नहीं है, उसके सहारे वो फ्लाई करके गए हों, दैट इज पॉसिबल। लेकिन मनुष्य जो है वो फ्लाई करके जाएगा ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन एक तरफ हम ये भी देखते हैं कि बर्ड्स तो फ्लाई कर सकता है, तो हो सकता है उनके पास जो है कुछ ऐसी नॉलेज रही हो जिसके चलते कि वो फ्लाई कर सकते हो। ऐसा कुछ बर्ड्स के तरह उन्होंने सीख लिया हो फ्लाई करना, इट्स क्वाइट पॉसिबल। तो ये सब कई सारी बातें होती हैं जो तुमको सर तब हम एनालाइज लोग क्यों नहीं सीख सकते? तब तो हम लोग भी सीख के उड़ सकते हैं। या बिल्कुल, कोशिश करो। जैसे कहते हैं, जानते हो अभी जो तुम हवाई जहाज का देख रहे हो डेवलपमेंट, जो आराम से हम लोग अमेरिका से इंडिया चले जाते हैं, इसको डेवलप करने में कई लोगों की जान गई। जो तुम सोच रहे हो कई लोगों ने किया कि हाथ में पहाड़ पर चढ़ के अपने ऊपर में दो पंख, बड़े बड़े पंख बनाए और उसको दोनों बाह में बांध लिया और उसके बाद कूद करके उसको फ्लाई को पंख को चलाने की कोशिश की बर्ड की तरह, मर गए। लेकिन इस तरह की एक्सपेरिमेंट हुई है रियल हिस्ट्री में, समझे ना। सर आप रियल हिस्ट्री का बात करें, हम यहाँ हम बोले 1-2 साल पहले एक आदमी 13 साल से रेड बुल पी रहा था। तो रेड बुल का लाइन है कि रेड बुल गिव्स यू विंग, और रेड बुल पीते पीते एक रेड बुल का कैन पिया, 13 साल तक पीता था फिर भी, और कूद गया बिल्डिंग पर से, तो पंख नहीं आया। तो मतलब रेड बुल को सू कर दिया और उसको 13 मिलियन रुपया मिला। ये तो होता ही है, लोग ठगते हैं, इसको बोलते हैं बिजनेस में ठगी। तो लोग जितना भी प्रचार होता है, देखोगे तुम एडवर्टीजमेंट जो टीवी पर देखते हो,
सब क्या सच है क्या? नहीं। तो वो लोग ऐसे ही झूठा प्रचार करते हैं अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए। अब जब तुम खरीद लिए, तुम्हारा पैसा वो ले लिए, अब वो प्रोडक्ट अगर काम नहीं करता है तो तुम जाओ उनके पीछे, पकड़ो उनको, कोर्ट में केस में ले जाओ। लेकिन उसमें हो जाती है 9 की लकड़ी 90 खर्च। तुमने 100 रुपए का कोई चीज खरीदा जो काम नहीं करता है, अब तुम कोर्ट में करने जाओगे मुकदमा तो तुमको तो 25,000 लग जाएगा खर्चा। करोगे? लेकिन वो तो अपना 100 रुपया तुमसे ठग लिया। ये खूब चलता है आजकल बिजनेस की दुनिया में। चलो अब कोई कोई दूसरा साइंटिफिक, अभी हेल्थ साइंस का जो सवाल पूछना है पूछो। अभी तुम माइथोलॉजी की जवाब तो हम भी दे देंगे बाद में। पहले साइंस का सवाल जो जो डॉक्टर साहब आए हुए हैं इनसे पूछो जो तुमको पूछना है बॉडी पार्ट्स के बारे में। ये so that is what we should utilize this time. ओके सर। और है कोई सवाल तुम्हारे पास मेडिकल साइंस का? और कोई, और कल में क्या पढ़ी थी? नहीं सर, अभी तो मेडिकल साइंस का ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है? अच्छा, हम तुम्हारे रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछते हैं इनसे डॉक्टर साहब से। अच्छा यस डॉक्टर साहब, सर, ये एक क्वेश्चन आ जो गया। है इसका स्पीच का प्रॉब्लम है। तो स्पीच जो है इसका, इसके एज के मुताबिक जैसा नॉर्मल होना चाहिए वो नहीं होता है इसका स्पीच। थोड़ा सा अपने यहाँ क्या बोलते हैं, तोतराता है या जो भी बोलिए इसको। तो ये क्या प्रॉब्लम होता है और उसको कैसे ठीक किया जाता है? तो स्पीच का दो पार्ट होता है। एक तो आप सोचते हो और जो चीज सोचते हो उसको बोलते हो। एक कहते हैं कि इलेक्ट्रिकल पार्ट जो ब्रेन में होती है, आप सोच रहे हैं मुझे ये बोलना है, फिर उसको ट्रांसलेट करते हो तो क्या होता है कि मसल है, टूथ है, मूवमेंट ऑफ जीव है, तो इसको कहते हैं डिसआर्थरिया। अगर मसल का प्रॉब्लम है तो आप इसको ठीक कर सकते हो एक्सरसाइज करा के, जैसे कुछ सर्जरी से, जैसे जीभ किसी का नीचे बंधा रहता है तो उसका सर्जरी से वो सब ठीक होता है। लेकिन किसी को सोचने में ही प्रॉब्लम है, जैसे कोई किसी का सुस्त मनस्थिति है, उससे अगर कम हो रहा है तो उसके लिए फिर और दवाई है। तो समझ लो कि हम जो बोलते हैं उसका दो सेक्शन है। एक इज थॉट प्रोसेस विच इलेक्ट्रिसिटी, फिर कोऑर्डिनेशन ऑफ साउंड that happens to larynx, muscle, a tongue, and both of them have a different option of treatment. Okay. हाँ, हाँ ना, बिल्कुल। स्पीच साइंस, जैसे हम घर में 6 लैंग्वेज बोलते हैं, ठीक है, तो मेरा बेटा जो था तो उसको डेवलपमेंट डिले 2 साल तक बोलता ही नहीं था। हम उसको डॉक्टर के पास लेके गए तो लाइक उनका बोला कि देख, बिकॉज यू डोंट हैव वन लैंग्वेज, मल्टीपल लैंग्वेज, सो ही इज कंफ्यूज्ड। एंड फिर सही बात है हमारा। तो फिर अच्छा, कौन कौन लैंग्वेज बोलते हैं डॉक्टर साहब आपके घर में? क्या क्या चलता है जरा समझाइए। 6 लैंग्वेज। फर्स्ट हमारा पहला लैंग्वेज मैथिली, इसके बाद में नेपाली, फिर हम पूरा मूवी देख के हिंदी बोल लेते हैं और इंग्लिश तो पढ़ना ही पड़ता, तो 4 लैंग्वेज तो ऐसे ही चलता रहता है। फिर संस्कृत 5वां हो गया। संस्कृत भी नहीं, हम स्पेनिश भी बोलते हैं, थोड़ा फ्रेंच भी बोलते हैं, तो हम 6 लैंग्वेज चलता है। तो आपको, अरे भाई थोड़ा बहुत संस्कृत तो हम लोग सभी पढ़ते रहते हैं, तो 7 हो गया तब आपका। हाँ। अच्छा, हाँ। अच्छा, ये जो आप बोले हैं ना, एग्जैक्टली मेरे बेटे के साथ भी हुआ था। जब वो फर्स्ट ग्रेड में गया था, पहला जो ग्रेड होता है वो, तब हम लोग फिनिक्स में मूव हो गए थे न्यूयॉर्क से। तब तक तो घर में ही था। तो जब वो स्कूल में गया तो ये कुछ बोलता ही नहीं था वहां पर पहला ग्रेड में। तो फिर जो है उन लोगों के स्कूल को पता था कि भाई इस तरह की बात होती है, जो इंटरनेशनल बैकग्राउंड से बच्चे आते हैं उनको बोलने में दिक्कत होती है। फिर उन्होंने किसी वॉलंटियर था कोई अपना, हमारे दो बाद पता चला कि हमारा दोस्त ही था, उसको बुलाया वॉलंटियर को। उसने थोड़ा दिन इनको जो है इंग्लिश हिंदी दोनों को मिक्स करके समझाया। फिर धीरे धीरे ये इंटीग्रेट हुआ था मेरा बेटा फर्स्ट ग्रेड में। तो ये भी होता है कि डिले जो है, आदमी मल्टीपल लैंग्वेज के चलते बच्चे लोगों को इमीडिएटली अंग्रेजी बोलने या कोई दूसरी भाषा बोलने में जो है थोड़ी सी दिक्कत आती है।
अब जब बोलने लगता है फिर चुप ही नहीं होता बच्चा। बिल्कुल हाँ, वही होता है। इसी को बोलते हाँ, इसी को यहाँ हमारे मैथिली में बोलते हैं बपजेठ हो गया है। बपजेठ हो गए, वो तो बपजेठ है।